फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद नरसिम्हा। नमस्ते। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आवर एक्सपर्ट्स एंड आवर क्रिकेट क्रेजी फ्रेंड्स और बात करते हैं एशेज के सेकंड टेस्ट की। क्रिकेटर चैतन्य नंदा हमारे साथ हैं एंड विनीत रामकृष्णन इज आल्सो विद अस। नमस्ते जेंटलमैन, जय हिंद। एक बात बताइए चैतन्य, आप किसके पक्ष में हैं? बेख्याल बैरस्टो या चतुर चंट कैरी? डिपेंडिंग कि हम किस तरीके से इसको देखते हैं. If we see as a gentleman game, then I will be with Bairstow. If I see it's a series of ashes, then I am with Carey. Modern cricket, Alex Carey. Modern cricket, Alex Carey. But Jamie Alter is also with us. Jamie, MCC members have been suspended, action taken. They've been boozed down the long haul. यार, I just got off a show discussing this and I said यार, इन बुड्ढों को इतना अहमियत मत दो यार. They're living. You talked about Jonny Bairstow living in a bubble. ये सब अपने बबल में रह रहे हैं, right? They think कि अभी होम ऑफ क्रिकेट वहां है. भाई, होम ऑफ क्रिकेट मुंबई आ चुकी है बहुत साल पहले, ठीक है? Let them live in their own world. But jokes aside, for me, and I know we'll talk about Bairstow, Carey, Flan Dimkana. This came a week after that damning report into English cricket, जहां पे 4,000 लोगों ने कहा है कि English cricket is right now being plagued primarily by three things: racism, sexism, and an elite white men's club. ये जो visuals कल आए लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम से, this is the same problem that people are talking about. It's elitist white men. I saw one woman in that group, okay? This is privileged men. You have to pay some 10,000 pounds to join in. 20 साल आपको वेट करना पड़ता है. इस सब के बाद इस आउटडेटेड दुनिया में these people have the right to abuse people walking by. It's shocking, यार. You know, sometimes Vineet, I just feel they should just roll back into the Australian batting and the innings, जहां मार्नस लैबुशन को भी बेयरस्टो ऐसे ही आउट करने की कोशिश कर रहा था. तब क्या था? Exactly. I mean, ये part and parcel हो गया गेम का. As Chaitanya said, I mean, if you are looking at the spirit of the game, look, spirit of the game is gone. I mean, amateur cricket जब था तब था, अभी नहीं है. It's professional cricket right now. और आप बात कर रहे हैं 2 दिन पहले लबुस्काकने के साथ क्या हो रहा था. If you remember, I will take you back to 1882. Ashes, the legend of Ashes was born like this. W.G. Grace had a very graceless kind of an incident where he ran out Australia's tail ender just because he wandered out of his crease. तो ये तब से आ रहा है. और अब जाके England guys are like, नहीं, ये तो spirit of the game से against है, ये है वो. I mean, आप ही कर रहे थे चीट, आपके वहीं से शुरू हुआ है. अब आपको पता नहीं कहाँ से नया चीज आ गया. No, भाई, अगर if the ball is still in play and you walk out of the crease, can you blame the keeper for doing what their job is? अरे, Absolutely not. हाँ, लगान में they did it with a young boy, and they said कि that is all right, it's justified in the gentleman's game. I'm just bringing a real reference, but in real this happens. Now, if they were sharp, what's wrong with that? What's wrong with that? Let's ask K. Srinivas Rao is also there, but Chaitanya, अगर आप होते तो आप ये करते? अगर आप कैरी की जगह होते तो आप क्या करते? What would you have done? You're on mute, Chaitanya. Depending on the situation of the series, where it's going, how important it is, what kind of a mindset as a player I have at that point of a time, all these things comes into the play at that point of a time. But मेरे को लगता है यहाँ पे कैरी ने जो किया, because Bairstow is also doing the same thing from not now, from last 2-3 years he does the same thing. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसलिए Australians also did this because they know वो भी वो करता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you are doing this, अगर कोई अश्विन को मैनकाइंड करेगा तो अश्विन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो आई थिंक बेयरस्टो को भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. और एक अच्छी क्रिकेट के अंदर भी एज ए बैट्समैन, नॉर्मली आप लोकल क्रिकेट भी खेलते हैं या डोमेस्टिक भी खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो जब अगर आपसे आपको वॉक करना होता है तो या तो आप सिली पॉइंट शॉर्ट लेग वाले को बोलते हो कि दैट आई एम जस्ट गोइंग, ऐसे हाथ दिखाते हो, या फिर कीपर को बोल देते हो
तो आप ऐसे गेस्ट देके ही जाते हो। बट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को पता है कि अगर वो एक विकेट लेते हैं तो स्टोक्स के लिए, ऐसी विकेट लेने के बाद स्टोक्स के लिए 172 के आसपास चेस करना वो टेल एंडर्स के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर बेयरस्टॉ सेट हो गए और यही गेम अगर 100 नीचे आ गई तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड इफ दे कम 1-1 देन द सीरीज बिकम्स इक्वल। सो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको देखना होता है। तो कैरी ने एक बहुत स्मार्ट काम किया, उसने इसको देखा, उसने, और अगर आप देखेंगे साइड से देखेंगे तो केरी ने बॉल तब तक फेंक दिया था जब तक बेयरस्टॉ क्रीज के अंदर ही थे। मतलब he kept the ball and suddenly he threw the ball because he knew that he was going to walk. So उसने टाइम नहीं लिया वहां पे कि वो वॉक करेगा उसके बाद मैं फेंकूंगा। तो आई थिंक दिस इज जस्ट दे लॉस्ट द एशेस एंड दे एट द सेम टाइम दे केम टू नो दैट अंडर द प्रेशर। सो एक तरफ से इंग्लैंड मीडिया की हमेशा से आदत रही है जब दे आर ऑन द बैक फुट they come on front foot from their media. So I think this is something both of them do very well. The Aussies the Aussies also do it quite often. But Srinivas Rao, आपको क्या लगता है? Today everybody is talking about spirit of cricket, but Ollie Pope did something like this in 2022. So where was the spirit of cricket then? And had the roles been reversed, then where would have been spirit of cricket? First of all, this whole, whenever you refer to the term spirit of cricket, the first thing that comes to my mind is, when you have a very hot water bath and the water is like water that's running is extremely hot, and then you keep adding a little bit of cold water as and when you need it, थोड़ा उसको lukewarm करने के लिए। So laws of the game पे आप game खेलते रहते हो। Cricket जो आप खेलते रहते हो, you play according to the laws of the game, and then as and when required, you keep pouring in the spirit, whenever spirit is become a kind of a term that you now have begun to use it when you think it is convenient, right? And before I get any further into this conversation, I very strongly believe that these cricket, the way it is run today, it's a global sport, and and we are the ICC per se is looking at more nations to participate and make it into a truly global sport or whatever it is. In that, some archaic MCC rule book telling us what language must be used and how cricket should be played. I think it's high time to put an end to that. A rule is a rule is a rule. Period. You were supposed to stay in the crease. It's not so difficult. I'll just refer to one quote, and I thought it was very simply put. Harsha put out a tweet, and he said, "It's not very difficult to follow the rule. Just follow it. What is your problem?" So why get engrossed in all these conversations that are, people are fighting, arguing with each other, which is fine. I mean, it's cricket after all. But the point is, was Bairstow out? He was definitely out. Now, you want to look at it from the rule aspect, or you want to look at it from a spirit aspect. That is up to you, and I don't see any reason for spirit to step in. Law 20.1.1.1 states the ball becomes dead when it is finally settled in the hands of the wicketkeeper or of the bowler. But Law 20.1.2 also states that the ball shall be considered to be dead when it is clear to the bowlers and umpire that the fielding side and both batters at the wicket have ceased to regard it as in play. So that means both have to regard it as it is no longer in play. यहाँ पर बेयरस्टो को लगा कि भाई बॉल डेड हो गई है, लेकिन कैरी कर रहे थे, and I think there was an Aussie commentator and an English commentator together, and both of them agreed with the observation that although Bairstow walked past without looking back, Carey had in that motion itself thrown the ball. How would you see it, चैतन्य? आपको लगता है कैरी रुके हुए थे, या फिर उससे पहले के 2-3 बॉलों में उन्होंने नोटिस किया कि बेयरस्टो आगे बढ़ रहे हैं, आजू बाजू देखे बिना आगे बढ़ रहे हैं, क्रीज छोड़ रहे हैं? Yes, he noticed it, and Bairstow, if you see Bairstow की शुरू से ये हैबिट है, मतलब not this match, every game wherever he is playing, he does the same thing. और कैरी ने जिस तरीके से बॉल को थ्रो किया, उससे पता लगता है कि he was ready for it. उनके माइंड बना लिया that I'm gonna do this. और हो सकता है कि in between overs ये बात भी हुई हो कि वो वॉक कर रहा है, तो I'm just gonna do it because he as a normally आप जब ऐसा काम करते हो तो कहीं ना कहीं कैप्टन से आप पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि कैप्टन अगर डिसीजन वापस लेता है तो इट बिकम्स वेरी शेमफुल ऑन योर पार्ट. तो मुझे लगता है क्योंकि ये 2-3 से चल रहा था, तो कहीं ना कहीं आपस में सिग्नल हो गया होगा इस बात का. दैट्स व्हाई इफ यू सी पैट कमिंस भी उस टाइम पे सरप्राइज नहीं थे जो कैरी ने किया था. अगर आप वो देखेंगे विजुअल, तो एवरीबॉडी वाज रेडी, एवरीबॉडी वाज, they celebrated like they planned it.
They knew it that they're gonna do. That's the way Yeah, they yeah. celebrated it. It's the way they celebrated it, that they were all in on it. You got the sense that everybody knew what was going to go on. Yes, Jamie. Watch the sequence, right? Cameron Green bowls a bouncer. Yeah, Jamie, go ahead. Cameron Green bowls a bouncer. Jonny Bairstow ducks. Alex Carey collects it and he immediately throws it. जब ball उनके glove से निकलता है, that time he was in his crease. When it made impact with the stumps, he had walked off, right? That collecting and throwing it back is a second and a half. What indication did Jonny Bairstow get in 1 second? के over हो गया. He was clearly at fault. ये उनकी गलती है. और जैसे कि अश्विन ने ट्वीट किया था, this was something they picked up. So there's no debate. He was, as per the rules, he was out. जहां पे spirit of cricket इस पे आ रहा है, like Shini was saying, I'll just add this. We only hear about spirit of cricket when one team or one player is aggrieved, where they feel we've been cheated. बाकी साल भर 5 साल तक वो कब होता है जब सूरज रणदीप एक वाइट बॉल डालता है जब वीरेंद्र सहवाग 99 पे है, right? When something happens, right? So it's a very convenient and outdated term, which I think frankly we should all just like collectively throw it out. It's very convenient. It's a narrative which is pushed. जब किसी को लगता है कि यार मेरे साथ ना नाइंसाफी हुई है, मैं भी कुछ करूंगा. It's always this case, and majority of the time it comes from the Brits and the Aussies. इसके आगे क्या बोलें इसके बारे में यार? Because in the same match, if I remember, the Ben Duckett incident that happened, that was declared a dead ball. Now the Aussies could have gone up in arms and say, "Boss, dude, what is this going on? ये dead ball कहाँ से हो गया?" But umpire ruled it a dead ball, Srini. So some go your way, some don't go your way. Srini? Yep. I lost you in between. I lost that one. I said one full line. In the in same between. match, the Ben Duckett catch happened. That was disallowed. It was deemed a dead ball. Right. So the Aussies could have said, "अरे ये भी cheating है यार. कैसे umpire कैसे decide कर सकता है?" यहाँ भी decision umpire ने लिया. यहाँ पे भी exactly. So the basic thing is go by the umpires. If not anything, there is an umpire dictating the course of play, right? Just go by the umpire's call. Like for example, I don't think outside narratives here matter at all. There is a match official in place whose job it is to take the call. So tomorrow, if the match official is not coming up with the right narrative, right decision, that takes it to a different level. You want to mark a protest with the match referee. You want to take that further. You have other ways of doing it. But while the game is on, whatever happened to that good old rule that once the umpire's finger comes up, you walk. You do not argue with it. So, for example, my mind. You brought the Duckett incident. My mind goes to that the catch that Mitchell Stark took. Yeah. Okay. Now forget the decision. Out tha, nahi tha, that's secondary. Point is, I remember watching Glenn McGrath in the commentary room. I was listening to Glenn McGrath. You look at how McGrath goes about describing that catch. He is convinced that it's a clean catch. He is telling the guys sitting next to him, "Have you all lost your minds? What is wrong with you people? If that's not a catch, I don't know what is." And it is so blatantly said in your face that you think at times for a moment, Anand, you're going to begin to think, am I watching the right thing? Is something wrong with me? Am I not being able to see the right thing here? So outside narratives don't matter. What the umpire says or the rule of the book says. That's why I think we need to go a bit slow on what people may have opinions. Correct me if I'm wrong. Don't you feel this rule book applies differently to different teams and who's playing who? Of course it does. In so many ways. I mean, in so many. Shubman Gill catch. I'm not convinced. I'm still not convinced. हाँ, कैमरन ग्रीन वाला मेरे को कितना भी कोई भी कन्विंस कर दे. I was there. I have been saying this. The moment that Shubman Gill catch happened, the umpire gave out. We are still trying to wrap our brains around what happened. And in less than 5 minutes, Kettleborough's version of why the decision was taken, the ball being in control and all, suddenly the narrative is out from where. And by the way, I wouldn't like to name the person here. One of the persons who actually was
among the first people to tweet about the fielder being in control of the ball. I caught hold of that guy at the Oval and I asked him very respectfully. I said, explain this to me. I can tell you, I wasn't convinced at all. I was being explained to in a manner where the guy doing the explaining himself was not at all convinced. It was almost like a forced thing. So I think the grammar of the rules are being paid a lot more emphasis than the comprehension, the facts. So I think we need to No, kind of is learn this to distinguish between the grammar and what the text of the law says. no, not just that. I'm going to go back to Jamie and ask this question: that is this element of racism also endemic in the perceptions? That कुछ teams अगर catch claim करेंगे तो doubt है, कुछ claim करेंगे तो सही है. And somewhere it goes back to who has the authority or who do you believe will be more truer to the cause, irrespective of the fact that they've been caught being this one on the wrong side of sportsman spirit quite often, more often than not. This is not the first time Aussies have claimed a grass catch. Ponting has claimed it in the past. There are others also who have brazenly claimed it and then got away with it also. Jamie. It's a very simple thing. It's like saying it's okay if I pick your pocket, you pick my pocket, तो मेरे बारे में कुछ मत बोलना. It's actually as simple as that. वही है ना ये वही हो गया ये. And unfortunately it does come from these two teams, which no coincidence ये सबसे पुराने teams हैं. इनके laws, इनके boards, इनके history हम सब सुनते आए हैं, And it just goes back to, I think, something we discussed earlier when we did that episode about the report. It's also systemic. It's in their culture, right? It's in English culture. So I just go back to जैसे कि मैंने show की शुरुआत में कहा था, that report of 4,000 people apparently interviewed. They raised three things. They raised racism, they raised sexism, and they raised that white man's elite club. This is part of it, but the bigger picture is what we saw the Australian team being subjected to when they had to walk through the long room. So big problems in English cricket here right now. You think this has taken the sheen beneath of Ben Stokes' phenomenal innings? Virat Kohli was raving about it. Has this taken the sheen of a fight back that could almost have been, or the fact that Aussies are now 2-0 up in this Test series? No, I'll tell you. It's a pity. I'll get Vineet and then Jamie, I'll get you. Yeah, it's a pity that we are not talking about Ben Stokes' innings, and we are pretty much focused on Jonny Bairstow's run out, which is actually a non-controversy. But that's how it is. I mean, that's how the English game has been. English cricket has been that way. I mean, उनके पास साथ कुछ हो जाता है तो बहुत हो अल्लाह मच जाता है. And as you said, I mean, Ben Stokes played one of the most remarkable innings. I mean, has done that in the past as well. We should have been talking about that innings more. And of course, I mean, Australia going 2-0 ahead. I mean, with the baseball and everything, also with the pressure on the Australians. Look, they are ahead 2-0, and England are under the pump. So we are not talking about it. Maybe that's also one of the reasons why this Jonny Bairstow incident has been hyped up that way. That could one of the reasons be. Okay, bhai, let's play the victim card and let's not face the barrage of questions. Boss, you're 0-2 down in the Ashes series, playing at home. Lords में तुम्हारा कट गया, उससे पहले तुम्हारा पैंट बच गया. क्या हो रहा है? And that collapse that happened, except for Duckett and Stokes, nobody else was among the runs there also. Exactly. So Yeah. Jonny Bairstow क्या उखाड़ लेता अगर वो बैटिंग कर भी लेता, because he was all at sea. He was not looking comfortable there in the middle at all, चैतन्य. तो वो Bairstow 4 बॉल के बाद ही आउट हो जाता. क्या भरोसा? आपको क्या लगता है वो 200 मार देता? हाँ चैतन्य, आपको क्या लगता है? You think this is attention diversion tactic? Yes, that's what I'm saying, because they are losing. They were under the pump. That's why they have created this all the media hype and everything about it. Or वैसे भी these teams have this habit, when something goes against them, then they start cribbing a lot. दोनों की टीमों के लिए सेम है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी. जब भी उनके साथ अगर उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा होता है जिसपे वो दोनों बिलीव नहीं करते, जैसे जेमी ने बोला दे हैव मेड देयर रूल्स. सबसे पहली बात ये जो रूल्स हैं, अगर आप देखिए कॉमन सेंस की बात है, अगर आप मैं कैच पकड़ रहा हूँ और कैच पकड़ते बॉल जमीन पे लग गया है तो वो आउट है ही नहीं. बट आप उसके पीछे एक रीजन बनाए कि नहीं, बॉल कंट्रोल में आ गया था, उसके बाद वो प्लेयर गिरा तो उसके बाद उसका हाथ जमीन पे लगा. आप एक नैरेटिव बना रहे हैं जबरदस्ती का. अरे नॉर्मल आई में आप देखो ना, उसने कैच पकड़ा, वो इतनी स्पीड से गिरा और उसके हाथ से बॉल नीचे लगा. कितनी बार हमने देखा कि कैच पकड़ने के बाद नीचे एल्बो लगता है या हाथ लगता है और बॉल बाहर आ जाती है.
तो उसको भी आउट देना चाहिए, उसको क्यों मना करते हैं? देन ही शुड बी आल्सो गिवन आउट, बिकॉज़ जब तक वो नीचे गिरता तक तो बॉल उसके हाथ में कंट्रोल में होती है. So it has to be a common sense used in the rules, because I have also read, these papers of match referees, the law. जबरदस्ती के लॉ बने हुए कहीं लॉ तो मतलब you will laugh on it if you go through all the laws. वो जबरदस्ती के बना रखे हैं. और दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि Bairstow, obviously this is cricket. As a bowler you need just one ball to get a batsman out, and chasing 172 in the fourth inning, there's always a pressure. जैसे Stokes, when you have nothing to lose, then you can play a game like Stokes plays. But जब आपको दिखता है कि आप दो बैटर खेल रहे हैं तो बड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है. Then you have to watch every ball, then you have to plan the inning. उसके बाद तो जो स्टोक्स ने किया वो हम सब कह रहे हैं कि स्टोक्स बहुत गुड इनिंग खेले, बट स्टोक्स के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था. वो क्या करते? 172 अगर वो टेल के साथ नॉर्मली बनाना चाहते तो नहीं बनते, और मैच बचाने जाते तो वो कहीं ना कहीं मैच हार जाते. तो ही हैड नो अदर ऑप्शन टू गो. देयर इज ओनली वन वे, हाईवे उस टाइम पे था, उसने वो चूज किया. मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको जब जस्ट हाइप किया है. और हम स्पिरिट ऑफ गेम की बात करें, इस गेम में इस मैच के अंदर 52 टाइम्स और 52 टाइम्स से ज्यादा बॉल या तो हेलमेट पे लगी है या बॉडी पार्ट पे लगी. ये भी एक रिकॉर्ड बना इस मैच के अंदर. तो वेयर वाज दैट स्पिरिट? आप टेल एंडरों को बाउंसर मार रहे हैं, टेल एंडरों को बाउंसर मार के आप आउट कर रहे हैं, तो वेयर इज द स्पिरिट ऑफ द गेम? ऐसा तो नहीं होता था जेंटलमैन गेम में कि आप फास्ट बॉलर को जिसको बैटिंग नहीं आती आप उसको बाउंसर मारते हो. अब तो सिर्फ बाउंसर ही मार रहे हैं. जेमी एंडरसन को कल जब सर पे बॉल लगी लास्ट विकेट पे, उसके बाद स्टार्क ने फिर 2 बाउंसर मारी. तो गेम ये तो जेंटलमैन गेम में तो नहीं होता था कि हेड पे बॉल लग गया है, हेलमेट चेंज हो गया, उसके बाद फिर 2 बाउंसर पड़ रहे हैं उसको. तो वेयर इज दैट स्पिरिट ऑफ गेम? आप जो बात कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट है, यहाँ पे कुछ नहीं है. यहाँ पे रिजल्ट मैटर करता है, यहाँ पे रिजल्ट ही मैटर करता है. अगर आज इंग्लैंड 2-0 डाउन है तो वो डाउन है, और अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती 1-1 ऑल होता तो सब बोलते यार व्हाई नॉट दे हैव टेकन दिस चांस. और अगर पैट कमिंस ने ये डिसीजन वापस लिया होता और अगर वो हार जाते तो पूरा ऑस्ट्रेलिया मीडिया पैट कमिंस के पीछे पड़ जाता. इंग्लैंड बहुत तारीफ करता है उनकी कि ही हैज डन अ ग्रेट जॉब, ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ जेंटलमैन. हीरो. हां, ऑस्ट्रेलियन मीडिया उसके पीछे पड़ जाता. ऑस्ट्रेलियन मीडिया नहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उसको कप्तानी से हटा देता 3 टेस्ट के बाद, या एशेज के बाद वो कप्तान नहीं रहता. खत्म ही होता, खत्म ही. तो फिर एक काम करे, फिर इंग्लैंड को चाहिए एंडरसन अगले मैच में आके स्टार्क की टांगे तोड़ दे. जब वो बैटिंग कर रहा है सीधा यॉर्कर पे यॉर्कर डाले, उसकी टांगे तोड़ दे, टो क्रश कर दे, ताकि वो दौड़ के बॉलिंग ही नहीं डाल पाए. यहाँ पर क्या हो रहा है आनंद की ना, जो इंग्लैंड जिस बॉलिंग से खेल रही है उनके पास स्पेस नहीं है. ऑस्ट्रेलिया उसका बेनिफिट उठा रही है, उनके टेलेंडर्स उसका बेनिफिट उठा रहे हैं. और ऑस्ट्रेलियंस अगर टेलेंडर्स आप देखोगे तो वो इंग्लैंड के टेलेंडर्स से बेटर है. वो छोटा बॉल खेलना अच्छा जानते हैं. आप देखिए पैट कमिंस अच्छी बैटिंग करते हैं, वो पुल पे ही तैयार रहते हैं. हेजलवुड भी बैटिंग कर लेते हैं, स्टार्क भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं जब उनके बैट पे बॉल लगती है. तो वो दे आर नॉट 100% बैट्समैन, बट दे आर एज गुड एज बैट्समैन. तो उनके पास वो टेक्निक है. बट अगर आप इंग्लैंड की जो बॉलिंग है, एक तो वो स्लो बहुत है, दे आर नॉट क्विक एनफ, और दूसरा उनके जो बैट्समैन है नीचे वाले वो इतने अच्छे बैटर नहीं है. दे आर प्रॉपर टेल एंडर. जिमी टेल एंडर है, टॉम को हमने देखा वो टेल एंडर दूसरे टंग. और अगर वो स्पिनर भी खिलाते हैं, जो उनका एक नया लेग स्पिनर है या लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाते हैं, तो वो भी कोई अच्छी बैटिंग नहीं करते. तो मुझे लगता है यहाँ पे ये डिफरेंस है. दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग दिस बाउंसर ऑन इंग्लिश प्लेयर्स. पर एक बात बताओ, खेलेगा उस मैच में, एक बात, एंड लेट मी टेक दिस अराउंड. जब बॉलर होता है, बॉलर से एक्सपेक्टेड है कि वो नॉन स्ट्राइकर को 1-2 बार वार्निंग दे. इफ द नॉन स्ट्राइकर इज बैकिंग अप टू मच, so non bowler से expected होता है in the spirit of the game and even as per the rule book, as a good boy you should just warn the non striker once or twice. अगर आप backing up too much तो उसके बाद आप आउट करो, चलेगा, दौड़ेगा. तो विकेट कीपर पे क्यों नहीं लागू होता? कैरी भी तो कह सकता था बैट्समैन को आई एम वाचिंग यू. नहीं, वो देखो वैसे तो कई बार कीपर बोल देते हैं, काफी बार होता है कीपर बोल जाते हैं, बट बॉलिंग के अंदर जो मैनकाइंड की बात करें उसमें अभी उसने बॉल शुरू करना है, अभी गेम को शुरू करना है. यहाँ पे गेम को फिनिश होना है, बॉल को डेड होना है. बॉल यहाँ पे लाइव है, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो ये कर सकता है. लेकिन वहां पे अभी हमने गेम को अलाइव करना, वापस जिंदा करना है, बॉल डाल के बॉल को प्ले में लाना है. बट अगर हम वो बॉल को प्ले में नहीं लाते, उससे पहले हम मैनकाइंड करते, तो वो डिफरेंट सिचुएशन है. दोनों चीजें डिफरेंट है. तो वैसे तो होना तो वहां पे भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सिचुएशन फंसी हुई है, एक बॉल पे 2 रन चाहिए और प्लेयर क्रीज से बाहर जा रहा है, तो मैं क्या एज ए क्रिकेटर आके पहले बोलूंगा भाई नहीं तू वापस आ जा यार, मैं तुझे आउट कर दूंगा अगली बार, क्योंकि मैं अगर वो करूंगा तो अगली बार वो निकलेगा ही नहीं बाहर. तो सिचुएशन के टाइम पे वो देखना होता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट. बट
बॉलर में और कीपर में ये फर्क है कि कीपर के पास जो बॉल जा रहा है वो डेड हुआ है या नहीं हुआ वो डिपेंड करता है। हाँ, एलेक्स कैरी अगर बॉल पकड़ लेते, बेस्ड और आधी विकेट पे पहुंच जाते, वो उसके बाद बॉल को फेंकते तो वो शायद गलत दिखता। बट अगर आप बार बार विजुअल देखोगे तो उन्होंने बॉल पकड़ते ही फेंका है। तभी मैं बोल रहा हूँ, इट वाज नॉट कि वो उन्होंने सिर्फ डिसाइड किया कि मैं इसी बॉल पे करूंगा। वो मेरे को लग रहा है कि वो पिछले मैचों से भी देख रहे हैं और इस मैच में भी 2-3 ओवर से वो वॉच कर रहे थे कि बेस्टो ये गलती बार बार कर रहे हैं, तो दे हैव दिस चांस व्हिच दे कैन टेक एंड व्हिच कैन मेक देम अप इन दिस सीरीज 2-0। सो ये बहुत बड़ी बात है। 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, यू आर 2-0 अप। अगर अब क्या इंग्लैंड को सारी विकेट बनानी पड़ेंगी जहां पे उनको रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट्स बनानी पड़ेंगी। तो रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट्स में भी ऑस्ट्रेलिया के पास भी उतना ही चांस है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पास अभी एक बेटर ऑफ स्पिनर उनके पास पड़ा हुआ है जो अच्छा परफॉर्म करके गए इंडिया में, लेकिन अभी इंग्लैंड के पास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वो ऐसे कोई स्पिनर लाके आएंगे जो मैच चेंज कर दे, क्योंकि मोइन अली की लेकिन क्या इससे जो माहौल है और एक्रिमोनियस हो जाएगा। यू सॉ हाउ स्टुअर्ट ब्रॉड वाज माउथिंग ऑफ सो मच एंड एवरी टाइम ही वाज मेकिंग अ बिग शो अबाउट कि मैं चलूं, मैं जाऊं, मैं बाहर निकलूं, क्रीज से बाहर निकलूं, ये करो। ये वही बंदा है जो ही डिडंट वॉक बैक। अभी रविशंकर कह रहा था 2013 में आउट होके भी ही डिडंट वॉक। So this is the lot. So Srini, but yes. I'm just saying. So why, if you are expecting the bowler before he bowls, why shouldn't you expect the keeper before he stumps you or runs you out? Especially when it's a situation like this where you assume that the ball is done, or because you are assuming you have made an ass of you and me. हाँ जी. I'm saying a bowler. I can hear you now. I can hear you. Go ahead, please. Go ahead. I'm saying let's take the example of R. Ashwin. Okay, R. Ashwin running out a non-striker. Okay, now the precedent has already been set because Ashwin has targeted the non-striker for not backing up whatever, and has already kind of made sure that batsmen have walked back because of kind of not backing up. So the precedent here has already been set. Once the precedent has been set, where is the question of a warning? Because here I am clearly telling you here the ICC and the MCC, it took them decades to name the dismissal correctly. To just name the dismissal correctly. That's how archaic you all were. And does the law say that you cannot do it? Of course, the law says that you cannot do it. So where has been the argument? When Ricky Ponting comes and says, I will make sure that R. Ashwin does not, whatever. He said something to the effect that Ashwin should not or will not, whatever, right? Why? I mean, what kind does the rule say that you cannot do it? So coming back to this whole Bairstow thing, let us stick to the rule. The rule says, we had put the rule was there right on the screen, right? Can it be brought back? So look at the follow-up rule. Look at what the follow-up rule. The follow-up rule says the ball shall be considered to be dead when it is clear to the bowlers and umpire that the fielding and both batters are. Boss, it was a fraction of a second that took Bairstow. Where we are looking at that video clip and we're saying that he actually ground his feet and then started walking, right? It was a fraction of a second. It was not clear to the bowler's umpire. So the ball was clearly in play. If you look at this follow-up rule, the ball was in play. There is no doubt about it. And if the fielding side wants to claim the dismissal, they are well within their rights to do so. That is where the whole confusion lies. Should Australia have done it? Should Australia have not done it? But I think that's where it. Expect Australia to do it. Ricky Ponting अश्विन को कंट्रोल करेगा। वो बंदा जिसने तेंदुलकर का ग्रास कैच क्लेम किया, वो क्या ये करेगा? 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली, कमाल करते हैं। लेकिन then there should be no corners cut for the Aussies also. Then you need to be as ruthless as possible and not cut any corners for the Aussies if they are going to play, push this ambit of gamesmanship. Then Aussies are playing. Anand, then let's go. Then the Englishmen should also not cut any corners. Stop cribbing. That's one part. One small thing I wanted to add here. The most important part of this, you look at the incident involving Usman Khwaja in the MCC members stand. Yeah. All right. When Khwaja was walking back. Okay. These are the very men. These are the men. They are those people who have that stiff upper lip. Okay, and that chip on the shoulder.
where they think that for centuries they are the ones who have been running this game and happen to be the patrons of it. That is the behavior. That is the behavior that was out there, visible to every single one, right? I mean, your blatant abuse of a player, right? Now, these are the people who are driving this narrative forward. But They that's can have exactly all what the Jamie has been saying all along. That's what exactly. Jamie has been saying all along, that the 3 points out of 4,000 interviews that came in was elitism, sexism, and this entire narrative of racism, brazen racism. So Jamie's been These saying that. people, the MCC, the ones which we saw on camera, they're the custodians of the body that wrote these laws, right? And doing what they did yesterday, because they're privileged to be. So only ground जहाँ पे आप privilege के कारण आप वहाँ पे खड़े हो और आपको ये chance दिया गया to cheer when you want to cheer and to abuse. तो ये they're disowning the same law जिनके ये custodians है. इससे बुरी बात क्या हो सकती है? You see, okay, finally, do you see England coming back onto this in this series? We're going to wind up. So जल्दी से any sympathy for Bairstow? आपको लगा अरे यार बच्चा तेरे साथ गलती हुआ, या फिर आपको लगा हाँ बेटा मुंगेरी लाल भुगत? हाँ चैतन्य, where are you? चलो quickly, last word. I think I'm not feeling bad for Bairstow. It is a mistake of Bairstow. He could have given a gesture to the short leg fielder or the keeper that is walking, just going to tap the wicket or whatever he wants to do. So uski galti hai. He should, and at the situation of the time of the game, he should not have done that, even for himself, even for the team. Or secondly, come back in this series. I think now Australia have an upper hand because England will try to win the game. They will be more desperate to win the game, and now Australia can play sitting game. Wait for the mistakes they have to do. But this episode can also pump England players more to perform more and show it. So कई बार आपका जो टिंगल होता है ना, हमने देखा है कि काफी बार वो अगेंस्ट भी चला जाता है. जैसे विराट को ऑस्ट्रेलिया ने किया था, तो विराट ने दिखाया था ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर. So I think sometimes this things can go against, but अभी देखा जाए एज ए सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया इज ऑन द ड्राइविंग. ऑस्ट्रेलिया का भारी है, और WTC 2025 के लिए क्या शुरुआत हुई है इनकी यार. पॉइंट पर पॉइंट बटोर रहे हैं इस पे. वो भी ध्यान रखना जरूरी है यार. 2 matches on the trot, big amounts on the leaderboard for the Aussies here. So Vineet, any sentiment for Jonny Bairstow, or are you going to just gift him an alarm clock? Nothing. I mean, yeah, alarm clock would be the best thing for him. Again, I mean, एक चीज यहाँ पे मैं यही point out करूँगा. You've seen this, specifically Virat Kohli. Whenever completes a run, when the ball is dead, he signals it to the short leg, the second umpire, and says, can I leave? There was nothing of that sort from Bairstow. So Bairstow was completely at fault. To answer your second question, I don't see England coming back. बहुत हुआ था बेसबॉल के बारे में, and I'll just bring in a reference of football here. Johan Cruyff's complete football lasted the test of time. Spain tiki taka हुआ था थोड़े टाइम पे, but Spain also realized when you have a solid defensive team against you वो भी फेल हो जाता है. बेसबॉल के साथ भी यही हो रहा है. आप छोटे मोटे टीम के अगेंस्ट तो कर लेंगे, but you have a solid outfit like Australia, and even for India that matter, it is not going to work out. You will have to play proper test cricket, boss. Yeah, somewhere I agree with Sunny Bhai where he says baseball बैटिंग में दिखा के फायदा नहीं है, बॉलिंग में भी दिखाना जरूरी है. आपकी फील्ड प्लेसमेंट्स टीवी के लिए नहीं होनी चाहिए, आपकी फील्ड प्लेसमेंट्स विकेट निकालने के लिए होनी चाहिए. So I think he had a solid point there. You're allowing Aussies to post such huge scores that itself shows that your baseball is one-dimensional. We'll keep that discussion for tomorrow. We'll get into baseball and approach, etc. But Jamie Alter, थोड़ा तो Bairstow के लिए कुछ तो sentiment होगा, या फिर उसको भी आप buzzer दोगे? नहीं, it was a stupid decision by him. That said, I just because of this baseball, halanki this term is getting increasingly grating for me because it has been so successful against top teams like South Africa. Well, they were much better placed. It's successful. Yes, we know कि आप जहाँ पे आपको थोड़ा flat wickets मिलेगा, वहाँ पे baseball के चलने के chances ज़्यादा हैं. But just somehow, I'm not going to write off England yet. But just to pick up on something that Chaitanya just said. Australia, I would counter that. They're already playing that waiting game. Usman Khwaja ने जो पहला टेस्ट मैच में किया ना, he said, "Boss, तुम अपना तेरे को जो करना है, I'm playing the waiting game." And it was because of the way that man batted ना in that first test match कि baseball मैंने कहूँगा कि हवा निकल गई, but हल्का सा ना एक prick मिला. So I think
हाँ, इस सेकंड टेस्ट मैच में थोड़े जल्दबाजी के कारण ऑस्ट्रेलिया also had a shocking collapse. If they can learn from Usman Khwaja and go back and see how that guy batted in the first test match, then it's exactly what Chaitanya is saying. They're going to be like, हम यहाँ झंडा गाड़ेंगे, तुम लोग अपना खेलते रहो, and it is definitely advantage Australia. लेकिन somehow I would not rule out two wins in a row for England. Not three, but two is on the card. I still feel. One gets the feeling that England will come back stronger, at least on the field, and they will correct. They will करना ही make पड़ेगा. few adjustments and corrections. And this time, inka second, there are many who are saying Australia winning 3-1. अपना 4-1 maybe. 4-1. You're saying सारे टेस्ट में रिजल्ट आएगा? सर ड्रॉ तो आएगा नहीं, ड्रॉ नहीं आएगा इस सीरीज में. ड्रॉ नहीं आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है सारे टेस्ट में. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि देयर विल बी अ रिकैलिब्रेशन. स्टोक्स एंड Baz will actually they will recalibrate a bit, especially on the bowling front, and you will see a certain amount of aggression which will be given back to the Aussies. They will get a fair measure of this gamesmanship at certain levels. Srini, क्या लग रहा है? जॉनी बेयरस्टो को थोड़ा सा कुछ तो चल यार एक चाय पी लेते हैं, ऐसा फीलिंग है कि नहीं है? You know what, कि out है, agreed, सब कुछ agreed, but you have to feel bad for him. मतलब वो बेचारा, मतलब it was at 1 minute second का this thing, and it just happened. I mean, the guy, for all you know, he wasn't even aware. Fair, fine. I mean, I'm not saying that he was not out. He was out. But just imagine, I mean, how many times that the batsman is actually thinking, oh, kind of, this is the way you can possibly get out. So you got to feel bad for Bairstow. It was the actual brain fade moment, not the Aussie kind of brain fade. So, and that said, what do I think about the third test or the series? I don't know about the result. I don't know what England does. One thing I know is I will pay good amount of money to be in Headingley. I will want to pay if given an opportunity. This series opportunity क्या है? Flight book करो, जाओ, बैठो, देख के आओ, और हमारे लिए वहाँ से खबरें भी कर लेना. If you're ready to spend good amount this series, of money, this series has just come alive. This series has just come alive. Yeah. I expect England to fight back strongly. We expected India also to do a lot of things, but that didn't happen. Let's hope England do a better job on क्या कहते हैं ना कि उम्मीदों पर खरा उतरना. England do a better job than Team India. All right, gents, good talking cricket. कल बेसबॉल पर बात करेंगे, टेस्ट क्रिकेट के नए अवतार पर बात करेंगे, इसको कैसे इवॉल्व किया जा सकता है उस पर बात करेंगे, और फिर क्रिकेट की अन्य खबरों पर भी बात करेंगे. चलिए, थैंक यू वेरी मच. Bye-bye. Thank you. Fastest cricket score updates या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.